Okay. Hi everyone. Welcome to another session. So in this session, we are going to learn the external CSS. So yesterday we saw how we can apply the inline CSS and embedded CSS with our HTML pages. Now there is one more option we can use for applying the CSS in our HTML pages, that is external CSS. So why we require external CSS? Why it is necessary? The reason is, this is the CSS file, right? Sorry, HTML file. So we saw that we can apply the CSS from the head tag, right? So this why we added this CSS in the head tag. हमने head tag में क्यों डाला था? Because we wanted to use this CSS to our current HTML page. ये अपना HTML पेज है और इस HTML पेज में अगर आपको CSS का कोड अलग करना है और HTML का कोड अलग करना है, so we used body tag for writing the HTML code, and inside the head tag we are using style tag for writing the CSS code. इससे क्या हो जाता है? We can reuse the same CSS code for multiple tags. Okay, so these are the multiple tags available in the HTML, and if you want to use the same CSS code for multiple tags from the same page, then we can use embedded CSS, or we can also call it as the internal CSS. Now whatever CSS we have write for the current page, okay, index.html पेज के लिए जो भी CSS हमने लिखा है, वो सेम CSS मुझे रीयूज करना है और बाकी पेजेस के लिए, और मल्टीपल पेजेस, लाइक वी आर हैविंग होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, इवेंट्स पेज, portfolio page, right, in our website. Let's assume, so if you want to apply these CSS tags to all other pages which are available inside the current website only, so you can just make it external. Okay, and whatever CSS file you have created, you can just add that reference to the current web page. So let's assume मेरे पास एक index.html नाम का पेज है और एक पेज बनाते हैं अपन, उसका नाम देते हैं about us.html. Okay, now we are having two different pages. So this is our about us page where we are having HTML tag, head tag, okay, title tag, and this is your body part. Inside the body, let's add some headings. H4. This is my. This is about us page. Okay. Okay. So एक हेडिंग है, उसमें अबाउट अस पेज ऐसा नाम डाला हुआ है, और ये अपना इंडेक्स पेज है. ये मैं सारा CSS निकाल देता हूँ, ओके, फॉर टाइम में. ये निकाल दिया. बॉडी पार्ट में मान लो ये अपना होम पेज है, H3. This is home page. Okay, very simple. So we have two different pages. One is about us page and this is home page. So let's use H4, H3 here. Okay, अभी मेरा एक CSS है कि जहाँ पे भी एक H3 नाम का टैग रहेगा उसका कलर ग्रीन होना चाहिए. ओके, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे सिलेक्टर क्या आएगा? H3 मतलब एलिमेंट सिलेक्टर. यहाँ पे लिखता है कलर इक्वल टू ग्रीन. ओके, इस टाइप में. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेड सेक्शन में कि इस पेज में जहाँ पे भी H3 नाम का टैग है उसका कलर ग्रीन करो. मेरे पास सब हेडिंग भी है, H6. दिस इज डिस्क्रिप्शन. ओके, ये पेज का डिस्क्रिप्शन भी हमने लिखा हुआ है. दिस इज सब हेडिंग, नॉट डिस्क्रिप्शन. ओके, और ये H6 में है. और होम पेज में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक H6 डाला हुआ है. और नाउ इफ यू रन योर प्रोजेक्ट, this file, let's say I have just go here in Explorer and open index.html, right? So you can see this heading is in green color and this subheading is in black color. Okay,
because I have write the CSS like that. So in the index.html, wherever I found h3 tag, I just wanted to convert that tag. Sorry, wherever I found h3 tag, I just wanted to change the color of that tag elements to green. Okay, for the current page. Now I am opening about us.html as well. Okay, एक लिंक डालता हूँ एंकर एक्चुअली पता है हमें राइट। अगर आपको कुछ एक्सटर्नल फाइल का रेफरेंस देना है, अगर कुछ लिंक्स डालने हैं, so we can use anchor tag. In HTML sessions we saw that. Okay, यहाँ पे लिखा मैंने about us. Got it? So about us नाम का लिंक रहेगा, इस पे क्लिक करने के बाद about us का पेज ओपन होगा, और about us में होम पेज नाम का लिंक रहेगा, उसको ओपन करने के बाद index.html का पेज ओपन होगा। ये इससे हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पर नेविगेशन डाल सकते हैं अबाउट अस। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अबाउट अस आ गया। ओके, ये अबाउट अस। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, होम पेज आ गया, अबाउट अस आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन नेविगेट बिटवीन द पेजेस फ्रॉम द सेम वेबसाइट। ओके, सेम वेबसाइट का पेज है इसलिए हमने इसी विंडो में ओपन किया, अदरवाइज वी शुड ओपन दैट इन द एक्सटर्नल विंडो लाइक दिस इन न्यू टैब। So our point was we have added the CSS tag in the home page. Now I click on the about us page, so we redirect to that new page, but whatever CSS we written for the home page is not applicable for the about us page. वो जो CSS है home page की, वो about us page में applicable नहीं है। Why it is not? Because वहाँ पे जो हमने लिखा था H3 वो उस पेज के लिए था, लेकिन about us पेज के लिए नहीं है। तो अगर about us पेज में भी अगर हेडिंग है तो उसको भी ग्रीन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे ये स्टाइल टैग उठा के अबाउट अस पेज में पेस्ट करना पड़ेगा। अगेन ड्राई प्रिंसिपल, मैंने आपको कल बोला था कि ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ में मतलब एक ही कोड बार बार नहीं लिखना है। ओके, ट्राई टू मेक इट सेंट्रलाइज, ट्राई टू मेक इट कॉमन बिटवीन मल्टीपल पेजेस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में हम टैग लेवल पे इनलाइन सीएसएस लिखते थे, तो वो सीएसएस दूसरे टैग को यूज नहीं होता था। So just for that purpose, we made that code common across the current page by using the style tag in the head section, right? अभी यहाँ पे तो ठीक है, ये पेज के लिए ये कॉमन हो गया, लेकिन हाउ वी कैन मेक दिस CSS कोड कॉमन अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस फ्रॉम द सेम वेबसाइट। ये जो अपनी वेबसाइट है, इसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, तो हर पेज के लिए हम ये CSS कैसे कॉमन कर सकेंगे, तो उसके लिए द कंसेप्ट इज external CSS. Okay, so if you want to make your HTML code common between multiple web pages from the same website, you can go with the external CSS. अब यहाँ पे देखो, मैं external CSS कैसे यूज कर सकते हैं अपन, जाना है, एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है CSS नाम का, उस फोल्डर के अंदर मैंने नाम दिया style डॉट सी एस एस। और ये स्टाइल डॉट सी एस एस में आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कॉपी दिस CSS code. No need to copy the style tag. Okay, just copy the CSS code inside this file like this. Now, once you copy, you don't have to write that same code as an internal CSS into these two files, because we are going to link this file with the HTML page. So that way, whatever CSS you written inside this file will be applied to the HTML file. ओके, नाउ अगर आपने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया, होम पेज पे गए, यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। नाउ आई वांटेड टू अप्लाई दिस CSS जो हमने स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में लिखा था, आई वांट टू अप्लाई दैट CSS टू होम पेज। सो हाउ आई वी कैन लिंक these two file together, so you can link these file together by using link tag. Okay, there is a tag that is called as link, so you can use the tag like this, link href, और यहाँ पे वो फाइल का पाथ देना है। पाथ कैसे दोगे, करंटली यू आर इन रूट फोल्डर, राइट? रूट मतलब जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है उस फोल्डर में हो। इस रूट फोल्डर में से यू विल हैव टू गो इनसाइड CSS फोल्डर एंड देन फाइंड द style dot css file. So here you can write like this, css slash
style.css, this kind of code. Okay, ये empty tag है, means you don't have to write the closing tag for this. Okay, सेकंड थिंग, यहाँ पे हमने क्या किया है, href डाला, फाइल का पाथ डाला, उसके बाद आपको एक एट्रीब्यूट डालना है, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट. रिलेशन मीन्स व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज इट, स्टाइल शीट. ओके, REL ऐसा डालना है, रिलेशन पूरा नाम नहीं लिखना है. ओके, नाउ अगर आप देखोगे इस फाइल में हमने लिखा है कि जिस जहाँ पे भी H3 रहेगा उसको ग्रीन करो, जहाँ पे भी H6 रहेगा उसको मान लो ब्लू करो. ओके, ऐसा सीएसएस हमने लिखा है. तो अपने HTML टैग में H3 भी है, H6 भी है. ओके, तो इसका कलर ब्लू होना चाहिए, इसका कलर रेड होना चाहिए. कब होना चाहिए, जब ये फाइल लिंक किया रहेगा तभी होना चाहिए. अगर फाइल लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली ये ब्लैक कलर में ही दिख रहा है अभी. Now I am going to link that file together with the HTML page. Now if you refresh, you can see this tag is in green color, this tag is in blue color as per our CSS file. Okay. अभी मैं जा रहा हूँ about us पेज में. अगेन ये both are black, it means वो CSS नहीं लगा हुआ है. तो अगर CSS नहीं लगा तो आपको ये कॉपी करना है, about us में जाके पेस्ट करना है. ओके, देन ट्राई द होम पेज, दिस इज योर होम पेज, दिस इज योर अबाउट अस पेज. देखो दोनों में CSS आ गया. ओके, सो the importance of external CSS is you can just make your CSS code common across multiple pages. It is very important. Okay, so you can just reuse it. Otherwise, you will have to write this code for each and every H3 and H6 tag from the each and every page. So that is not a good practice. Okay, क्या होता है कि हर टाइम पे हम ये जो कोड रहता है हर टैग में जाके नहीं लिख सकते. ऐसे भी डेवलपर्स होते हैं, एज लॉन्ग एज आपको आउटपुट सही दिख रहा है कि ओके मुझे यहाँ पे ग्रीन डालना था, यहाँ पे ब्लू डालना था, तो हर कोई कोई डेवलपर जाके इनलाइन से डाल देगा, आउटपुट सेम दिखेगा, बट दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. इट इज वेरी हार्ड फॉर द मेंटेनेंस. बाद में अगर आपको ग्रीन का रेड कर दिया ना, क्लाइंट ने बोला कि जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर है H3 में उसको रेड कर दो, मैं बस यहाँ पे जाके चेंज करूंगा, वो सारे पेजेस में चेंज हो जाएगा. देखो ये होम पेज है या अबाउट पेज है, दोनों में चेंज हो गया. मैंने एक ही जगह पे चेंज किया. लेकिन अगर ये इनलाइन सीएसएस रहता तो मुझे सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेजेस मेरे वेबसाइट के अंदर है, सारे पेजेस में जाके मुझे ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पे H3 टैग है, उसका इनलाइन सीएसएस में मुझे रेड कलर डालना है. तो इट इज हार्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रोजेक्ट लेटर. ओके, बट इफ यू वांट टू basically use the external CSS and then you want to change, you got some changes in the requirement, it is very easy to हैंडल. लाइक अगर S6 का कलर मुझे येलो करना है, इट इज हार्डली 2 seconds ऑफ जॉब. यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, येलो कर दो, आपके जितने भी पेजेस है सब जगह पे येलो कलर आ जाएगा. देखो, इट इज वेरी इजी टू मेंटेन इफ यू आर गोइंग विद द कोडिंग स्टैंडर्ड. ओके, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.